थैंक यू सो मच भैया। रविकांत भैया स्वागत है आपका लाइव में। कैसे हैं आप? कानपुर में डिफेंस की जमीन अडानी को करोड़ों के भाव बेच दी गई। डिफेंस के लिए बनाया गया अडानी का ट्रायल ड्रोन पहली उड़ान में ही धड़ाम से गिर पड़ा। अच्छा भैया, थैंक यू।
स्वागत है रविकांत भैया जी। सॉरी भैया, कल मेरी ना मोबाइल की बैटरी एकदम डिस्चार्ज हो गई थी, मेरी लाइव कट गई। मैं सोच रही थी भैया चले गए, यही सोचे होंगे कि क्यों काट दिया लाइव, मेरे आते ही लाइव बंद कर दी, क्योंकि 5 घंटे हो गए थे मेरी लाइव चलते हुए, बैटरी एकदम डिस्चार्ज हो गई थी, फोन अपने आप बंद हो गया था। कैसे हैं भैया, घर परिवार में सब लोग कैसे हैं? बिहार में अरबों की सरकारी जमीन मात्र 1 रुपए में अडानी के नाम लिख दी गई। देश के एयरपोर्ट और बंदरगाह औने पौने दामों में अडानी को सौंप दिए गए। कोयला खदानों के लिए अडानी ने देश में 60 लाख से ज्यादा पेड़। थैंक यू भैया।
एलआईसी और सरकारी बैंकों के अरबों रुपए अडानी के शेयर बचाने में झोंक दिए गए। विदेशों में अडानी के प्रोजेक्ट्स के लिए भारतीय जनता का टैक्स गारंटी के रूप में लगाया गया। बिल्कुल भैया सही कह रहे हैं आप। थैंक यू सो मच। रेल माल ढुलाई से लेकर बंदरगाह तक हर जगह अडानी के एकाधिकार बना दिया गया। महंगाई की मार झेलते हुए आम जनता रोटी तेल और सिलेंडर के लिए तरस रही है। बिल्कुल भैया, लेकिन अडानी के अरबों खरबों बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल राइट भैया, बिल्कुल थैंक यू सो मच, आप सही बोल रहे हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। माता जी कैसे हैं आप? स्वागत है आपका लाइव में। सीमा बहन जय भीम नमो बुद्धाय, थैंक यू सो मच बहन। थैंक यू बहन, थैंक यू सो मच। मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसी हो? माता जी जय भीम नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप? आपका स्वास्थ्य कैसा है अब? थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं भी ठीक हूँ दीदी जी। दीदी को अपने गांव छोड़ने गई थी, वापस आई हूँ, घर जा रही हूँ। अब 2 बिटिया थी और सामान था। जीजा गांव में हैं, काम पर गए हैं, तो हमें छोड़ने गई थी। अच्छा, आप छोड़ने गई थी? हैं सीमा बहन, स्कूटी से गई थी क्या सिस्टर? हम तो ठीक है बेटी, अपना बताइए। हम भी ठीक है माता जी, हम भी एक एक दिन जो गुजर जा रहा है ना, अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गांव पहुंच गई हूँ, अभी साधन से उतरी हूँ, अब जा रही हूँ घर मोड़। अच्छा सिस्टर, थैंक यू बहन। थैंक यू माता जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हम 2-3 दिन से आपके लाइव में नहीं आ पा रहे हैं, 2 दिन से। सुबह सुबह चले जाते हैं, उस बीटर उधर से आते हैं तो लेट हो जाता है। हाँ दीदी, हमने छोड़ने गई थी। अच्छा सिस्टर,
और सवाल यह है, क्या ये सुन या न्यू इंडिया है जहां अडानी है तो मोदी है, मोदी है तो अडानी है? बन चुका है नारा आज देश की जमीन, खदानें, एयरपोर्ट, बंदरगाह, बिजली, बैंक, सब कुछ अडानी के हवाले कर दिया गया है। मैसेज क्यों डिलीट कर दिया सिस्टर? थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। क्या करें बेटी हमारे, क्या दिक्कत, लाइट के बहुत है। लाइट अभी आया है तो लाइव पर लगा करके सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, थैंक यू सो मच। स्कूटी से नहीं गई हूँ, मेरे यहाँ कोई मोटरसाइकिल नहीं है, साधन से गई हूँ। अच्छा सिस्टर, थैंक यू। रविकांत भैया जय भीम, रविकांत भैया जय भीम, नमो बुद्धा। हमारी सीमा सिस्टर आपको बोल रही हैं कैसे हो? रविकांत भैया जी पूछ रही हैं सिस्टर कैसे हो आप? सुशीला आंटी जय भीम नमो बुद्धाय। माता जी हमारी सीमा बहन आपको जय भीम नमो बुद्धाय बोल रही हैं। सरकार और पूंजीपति का ऐसा गठजोड़ जिसे देखकर अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी भी शर्मा जाए। यह लोकतंत्र नहीं अडानी तंत्र है। हमारे रविकांत भैया बोल रहे हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू। सीमा बहन जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी। हमारे रविकांत भैया जी की तरफ से सीमा सिस्टर को मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। सीमा बहन आप बताओ कैसी हैं आप? रविकांत भैया पूछ रहे हैं। बहन आराम से बेटा, बदमाशी मत करो, इधर ला।
मैं भी ठीक हूँ भैया जी। हमारी सीमा सिस्टर बोल रही हैं। ओके दीदी, थोड़ा आराम कर लो, मेरा सर दर्द करने लगा। फोन भी नहीं चार्ज है, फोन भी चार्ज कर लो फिर आऊंगी। कोई बात नहीं बहन, आराम कर लो। मैं भी ज्यादा फोन के सामने नहीं बैठूंगी, मुझे भी मनाही है। मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे, मैंने फिर भी लाइव चालू कर लिया है। मेरे भी दिमाग से ही प्रॉब्लम हो रही है। बाय बहन, बाय, थैंक यू सो मच। बाय बाय। ए आकाश, आकाश, इधर रोजबा का है, खोल के रख ले, बंद कर देना। भगा दे भाई, खोल खोल भाग गया तो फोनवा लेके। जो बंद कर देना, काहे खोल के रख ले पे।
जय भीम, नमो बुद्धाय। संजय भैया थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें तो नींद आ रही है भाई, दवाइयाँ खा ली है ना, बहुत नींद आ रही है। कैसे हो आप? ठीक है, आप आराम करो। हाँ भाई, मस्त हूँ। कैमरा के सामने बुझी मुझे ज्यादा बैठना नहीं है, बट क्या करूँ, बैठ जाती हूँ। दुकान पे हो? ठीक है, कर लो भैया, कपड़ा कटिंग कर लो, कर लो कपड़ा कटिंग। तबीयत कैसी है? थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। सेम बहन के लाइव में कोई बदतमीज आया था। अच्छा, क्या कह रहा था भैया? क्या कह रहा था?
मैं कोई काम कर रहा था इसलिए लाइव में नहीं जुड़ पाया था। हुआ क्या बताओ?
थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। कुछ लोगों की मानसिकता इतनी गंदी होती है, क्या किया जाए समझ में नहीं आता है। क्या हुआ भैया बताओ ना। बहन भी नहीं कुछ बताए। हुआ क्या बताओ। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। होना ही चाहिए ऐसे, ताकि इन लोगों को भी ना तर्क वितर्क जो कर रहे हैं ना, समझ में आना ही चाहिए। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। सभी भाई को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से।
थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। ऐसे लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा हमें सुनकर। होना ही चाहिए। जो बदतमीजी करे ना उसको बदतमीजी से जवाब देना है, क्योंकि मन बढ़ जो हो गया ना, मन बढ़ गया है इनका ज्यादा। हम लोग लाइव में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं ना, इसलिए ये लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। दीदी केवल मैं किसी से बात कर रहा था, पैसे के लिए, नहीं तो मैं लाइव में जुड़ा होता। अच्छा भैया, मैं भी नहीं थी ना, बात तो यहाँ से थी। मैं भी आई हूँ 3:30 बजे भैया, हॉस्पिटल से 3:30 बजे मैं आई हूँ घर पे। उसके बाद आधा घंटा रेस्ट करी हूँ, फिर मैं भी 4:10 पे अपनी लाइव चालू कर दी हूँ। मैं भी नहीं थी, मैं देख नहीं पाई आज क्या हुआ सिस्टर के लाइव में, कौन था। मैं भी जुड़ी ही हूँ, देख लो। सिर्फ कमेंट नहीं कर रही हूँ, देख ही रही हूँ। हैंग कर रहा मेरा फोन, कमेंट नहीं जा पा रहा जल्दी से।
गंदे विचार वाले जब आते हैं तो ये सोचते हैं कि उनका मनोबल टूट जाए, लेकिन शायद उनको यह नहीं पता वह जमाना बीत गया। हमने बाबा साहब को जाना है, पढ़ा है, शायद वह सब भूल गए। बिल्कुल भैया, बिल्कुल राइट। थैंक यू सो मच भैया, ऐसे लोगों को सबक सिखाना ही है। मैं आ रही हूँ भैया, मेरी
थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। संजय भैया थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच। ट्यूशन जाना है, कब जाना है? कितना टाइम बचा है? 5 जुलाई होगी, 14 दिन करोगे? काम नहीं है, फास्ट करो, फास्ट से तैयार हो जाओ, ट्यूशन जाओ, टाइम नहीं है। ट्यूशन का टाइम हो गया, रेडी हो जाओ।
हाँ बेटा, कोई बात नहीं है, रोटी बन गई है, मैं आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ। मैंने मना करके आया ना, बैठ के अपना बैग ले लो, काम करो। बोला है ना मैं, बैग लेके बेड पे बैठो। ओके नहीं, काम करो। ओके काम चलने वाला नहीं है, बैठ के काम करो। मैथ्स में पढ़ना है। श्रेया मार तो नहीं खाओगी? जो पढ़ना है वो पढ़ लो, जो काम मिला है। लाइक डन, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। ओके अच्छा, पापा बाहर चले गए क्या बेटा? अच्छा, क्या लेने गए? थोड़ा मैं बाद में आऊंगा, दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब है मेरा। हमारे बहन को अगर कोई गलत बोल दे बर्दाश्त नहीं होता। हुआ क्या भाई, ये तो बताओगे? क्या हुआ बताओ ना, मुझे भी बताओ। कौन सी आईडी थी, सेंड करना मेरे पे भी। आईडी सेंड करना भैया। संजय भैया आईडी सेंड करना हमारे पे भी। फ्रॉड आईडी थी कोई? अच्छा, फ्रॉड आईडी थी। ऐसे लोगों को फिर क्या लेना सिरदर्दी, कुत्ते ऐसे भौंकते रहते हैं भाई, हाथी चलना अपना छोड़ नहीं देती।
जो जितना भूखे ना भूखने दो, ब्लॉक कर देना सीधे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी। सिस्टर कैसी हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ दीदी, क्या बताऊँ, तबीयत तबीयत तो अगर सही रहती तो क्या करूँ। मैं तो सुबह निकल रही हूँ 3 बजे, 3:30 बजे हॉस्पिटल से आ रही हूँ, 3 दिन से फिर चक्कर लगा रही हूँ। लूबा डाल लो। बेटा मौसम ठंडा हो गया, इसमें क्या, इसमें क्या क्यों करते हो? लूबा डाल लो। अपना बताओ, आप कैसी हो? आप कैसी हो सिस्टर? घर परिवार में सब लोग कैसे हैं? कंचन सिस्टर के लाइव में कोई उल्टा बोल रहा था, उन्होंने लाइव बंद कर दिया सिस्टर। बाय भैया बाय, हम भी ठीक है सिस्टर। ओके बहन, सब घर परिवार में सब ठीक है सिस्टर। ओके सिस्टर, थैंक यू सो मच। ठीक ही रहना चाहिए बहन, ठीक ही रहना चाहिए, क्या करे, कुछ लोग है ना अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय। पता नहीं क्या सुनना चाहते हैं ये लोग। थैंक यू बेटा। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सिस्टर, फूल कुमारी सिस्टर, थैंक यू सो मच। खराब अच्छा सुनना चाहते हैं इसलिए वह लोग ऐसे बोलते हैं। बिल्कुल बहन बिल्कुल, ऐसे पड़ जाएंगे ना जब कभी कर ले अच्छे से, सारी एकड़ी बंद हो जाएगी। जिस दिन हम लोग इन लोगों के उल्टा बोल देंगे ना, उस दिन से अलग सुधर जाएंगे जिस दिन। बिल्कुल बहन बिल्कुल, ये इन लोग इसी पे लगे हुए हैं। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। बोलना ही पड़ेगा बहन, सहने की कोई बात नहीं है। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। अब ये लोग वही सुनना ही चाहते हैं।
थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। आज कौन सा दिन था सब लेंगे? जय भीम नमो बुद्धा, जय भीम नमो बुद्धा सिस्टर। ये हरी मिर्च है क्या? अब तो अरे कहाँ जा रहा है? टी शर्ट, हाँ जाओ, सही है। टी शर्ट फुल बाजू किसमें थी? टब में डाल लो, अच्छा लग रहा है बेटा। ये छोड़ श्रेया, लाइट चल रही है साथ। क्या हुआ है गौतम भैया? जय भीम नमो बुद्धा, थैंक यू सो मच भैया, स्वागत है आपका। कैसे हो आप? कैसे हो बड़े भैया जी? कुछ नहीं हुआ भैया, हमारे लाइव में नहीं हुआ है। एक हमारे नाम की जो सिस्टर नहीं है, उनके लाइव में किसी ने कुछ गलत बोल दिया है। ऐसे लोग मनबड़ है ना भैया, जो आते हैं अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। कंचन सिस्टर गलती कर दी अपना लाइव बंद करके, उसने उसका उल्टा भी सुनाना चाहिए था, 2-4 गालियां सुनाती ना तो अपने आप ही सुधर जाते। ठीक है सिस्टर जी, अच्छा भैया, थैंक यू। ठीक ही रहना चाहिए। और घर परिवार में सब लोग कैसे हैं भैया, गौतम भैया जी? फूल कुमारी सिस्टर, ऐसा ना, हम बहनें जिस दिन उतर गए ना अपने आप पे, इनको समझ में आ जाएगा। अभी बंद कर दी, ऐसे बंद कर रही थी, बंद हो गया। सही तो है। सब लोग ठीक हैं घर पर? अच्छा भैया, थैंक यू। यह लोग उल्टा बोल रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है कि हम लोग लाइव बंद कर देंगे। बिल्कुल नहीं बहन, इन लोगों से ना, इन लोगों को करारा जवाब देना है, लाइव नहीं बंद करनी है। जब हम लोग कोई काम कर रहे हैं ना तो उसको करना है, इन लोगों को जलने दो। सीख तो मिल रही है कुछ, इन लोगों को कितनी जलन हो रही है किस बात की। इन लोगों से ना हमको सीखने का मिल रहा है कि इनके माइंड में कितने घटिया विचार हैं। मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा। बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब ही देना है, इसलिए इन लोगों का सामना करना ही पड़ेगा, बंद नहीं करना है लाइव गुस्सा होके। बिल्कुल बहन, बिल्कुल, थैंक यू, सही कह रहे हैं आप। हम लोग गुस्सा होकर लाइव बंद कर देते हैं तो यह लोग को खुशी मिलती है। बिल्कुल बहन, ये सबको ना फिर दोबारा आते हैं। मेरे लाइव में नहीं आते ना, क्योंकि मेरे साथ कोई तर्क वितर्क शुरू करता है ना तो मैं तुरंत ही जवाब देती हूँ, बायकाट, ब्लॉक ही करती हूँ सीधे कि आपकी एंट्री नहीं है हमारी लाइव में। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। ऐसे लोगों को लाइव में आने की कोई जरूरत नहीं है। यह सब मनवादी विचारधारा के लोग हैं, इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भैया नहीं, आप लोग जैसे भाई हम लोगों के साथ हैं, हम लोग क्यों डरेंगे? बिल्कुल भी नहीं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं भैया। हम लोग अपने मान सम्मान को बस कायम रखते हैं ना, छोड़ो जाने दो। अब ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं ना, माँ बहन इनकी भी तो एक लेडीज है, हम भी लेडीज हैं, क्या कहें, लेकिन ये लोग वही सुनना चाहते हैं, बस यही बात है और कोई बात नहीं है भैया। सनोज भैया, जय भीम नमो बुद्धाय, स्वागत है भैया जी आपका। कैसे हो आप?
थैंक यू सो मच। कहाँ बिजी थे सनोज भैया आप? इतने दिनों से आ नहीं रहे थे। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। सभी भाई बहनों को जय भीम, नमो बुद्धाय। उनको पता है सारा बहुजन समाज, दलित समान सब एक हो चुका है, जाग उठा है, इसके लिए लोग को जलन हो रही है। बिल्कुल भैया बिल्कुल, इसीलिए बौखलाए फिर रहे हैं ना इन लोगों को ना, इसलिए मिर्ची लग रही है। अब सच्चाई सामने आ रही है अब धीरे धीरे, इसलिए बौखलाए फिर रहे हैं। ठीक है दीदी जी, आप बताइए। जय भीम। हम भी ठीक हैं भैया, ठीक हैं। अभी हॉस्पिटल गए थे, 3:30 बजे आए हैं। क्या ठीक क्या है बताएं। हम तो इसी से परेशान हो रहे हैं, थोड़ा स्वास्थ्य से। संजय भैया नहीं है क्या आज? नहीं भैया, आए थे संजय भैया, अभी आएंगे। सिस्टर को ना किसी ने कुछ बोल दिया ना, वो भी परेशान हो गए हैं। संजय भैया थे, अभी आएंगे 2 मिनट में। साथ सिस्टर से बात कर रहे हैं। सिस्टर बहुत परेशान हो गई थी ना। अभी हमारे लाइव में ही थे भैया, वो अभी गए, अभी आएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय बड़े भैया जी और हमारे प्रिय बड़े भाई जी। थैंक यू भैया, थैंक यू। कैसे हो हमारे प्रिय बड़े भाई जी? संजय भैया आ भी गए नाम लेते ही। सनोज भैया जय भीम, नमो बुद्धाय। फूल कुमारी सिस्टर बाय बाय, थैंक यू सो मच बहन, बाय बाय। जय भीम, नमो बुद्धाय संजय भैया जी, हमारे गौतम भैया जी की तरफ से। गौतम भैया आपको ढूंढ रहे थे संजय भैया। मेरा कमेंट हाइड हो रहा है क्या? रुको भैया, मैं अभी ब्लू दे रही हूँ, 1 मिनट दे रही हूँ भैया। दरवाजा बंद कर देना बेटा। थैंक यू सनोज भैया, थैंक यू। हम ठीक है संजय भैया जी, आप कैसे हो?
हमारे बड़े भैया गौतम भैया बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं। ब्लू कर दो दीदी। भैया इस वाले लाइव पे नहीं होता है सनोज भैया, इस पे नहीं होगा। पिन करने के लिए बोल रहे हो ना, मुझे पता है। जब शॉर्ट वीडियो से हम लाइव आते हैं ना, शॉर्ट से, उस पे होगा। थैंक यू थैंक यू। मैं ठीक हूँ बड़े भैया, कब से 2 सूट लेकर बैठा हूँ कटिंग करने के लिए। सूट लेके बैठे, कटिंग करने के लिए चल रही है लाइव। बाबू जरा पंखा चालू कर देना, पंखा चालू कर दो, पंखा चालू कर दो ना। किचन में से आई हूँ, गर्मी लग रही है। आपने हमारे चैनल को ज्वाइन किया है बड़े भैया जी, गौतम भैया जी पूछ रहे हैं। जी भैया जी ज्वाइन किया है, हमारे गौतम भैया बोल रहे हैं। पंखा ज्यादा तेज कर दिया, थोड़ा सा स्लो कर दो। स्लो करो थोड़ा सा, 1 पे करो, 1 पे बस चाहिए। दरवाजा बंद कर दो। जी भैया जी ज्वाइन किया है, हम भी ड्यूटी पर भैया जी, गौतम भैया जी भी ड्यूटी पे हैं। थैंक यू भाई जी, हमारे संजय भैया बोल रहे हैं। गौतम भैया जी थैंक यू सो मच। आप लोगों की ना डीपी सेम सेम हो जाती है, जब आते हैं ना तो अगर ध्यान से ना देखो ना, कंफ्यूजन सी हो जाती है। एक बार आपकी लाइव में गया था तो लाइट बंद हो गया था आपका तुरंत। गौतम भाई जी, संजय भैया बोल रहे हैं। जय भीम सनोज भैया, सनोज भैया जय भीम, नमो बुद्धा। भैया सनोज भैया सॉरी, इस पे पिन नहीं हो पाएगा, नहीं तो हम कर देते। शॉर्ट वीडियो से आएंगे ना कल, आप एक कमेंट डालिएगा, फिर हम कर देंगे आपका पिन। इस वाली लाइव पे नहीं होता भैया। भाई दोनों भाई भी हैं और काम में भी बिरादरी हैं, दोनों लोग टेलर हैं। ब्लू कर दो दीदी, अच्छा भैया। कर दिया सनोज भैया। जी भैया जी चेक कर रहे थे, समझ ज्यादा हो गया था। अच्छा, जो कुछ ना समझ में आए बड़े भैया जी, मैं हूँ, मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। हमारे संजय भैया बोल रहे हैं। मेरे नाम से वही ब्लू कर दो। अरे सनोज भैया नहीं होगा, इस वाले नहीं, इस वाले लाइव पे नहीं पिन होता है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, जिस दिन उस दिन किया था ना पिन, जब शॉर्ट वाले से आते हैं ना तब होता है। आप इंस्टा आईडी ज्वाइन किया भाई जी, हमारे संजय भैया बोल रहे हैं। गौतम भैया जी, गौतम भैया जी बोल रहे हैं जी बिल्कुल भैया जी। थैंक्स भैया जी, हमारे गौतम भैया बोल रहे हैं। संजय भैया जी आपको थैंक्स।
जय भीम जय भीम। सनोज भैया व्हाट्सएप इमोजी ना सेंड करो ना। हो। खाना पीना हो गया, खाना बना भैया, अभी हुआ नहीं है। खाना बन गया भैया जी। फेसबुक की आईडी थी या इंस्टा की? मैंने फेसबुक पर देख रहा था, मिले नहीं। इंस्टाग्राम की आईडी थी भैया। गौतम भैया जी इंस्टाग्राम की आईडी है। संजय भैया कहाँ चले गए बताओ सही। क्या क्या बन गया? क्या बन गया भैया? चावल रोटी बन गई, खाने वाले लोग अपना अलग खाना बना लिए, अभी हम अपना खाना बनाएंगे। आप इंस्टाग्राम चलाते हो? संजय भैया पूछ रहे हैं। घर में आज दूसरी सब्जी बनी है भैया, जो हम बता भी नहीं सकते। जी चलाता हूँ, बहुत कम भैया जी। गौतम भैया जी बोल रहे हैं चलाते हैं, बहुत कम चलाते हैं। समय कहाँ मिलता होगा भैया जी आपको चलाने का। आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद लाइव में जुड़ने के लिए, हमारी प्यारी बहन के। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई को, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से। जय भीम, नमो बुद्धाय। अरे हमारी भी बहन जी हैं भैया जी। बिल्कुल भैया बिल्कुल। गौतम भैया थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराई से। आप भी बहुत सबसे अच्छे बेस्ट भैया जी हैं। थैंक यू भैया। जी बहन जी सही कहा आपने। बिल्कुल भैया जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों को प्यार दुलार जो मिलता है ना, हम लोग भूल जाते हैं, अपनी बीमारी भूल जाते हैं, लाइव में जरूर आ जाते हैं। मर्दाना कमजोरी के इलाज पर रंगी हुई है शहर की दीवारें, और लोग कहते हैं कि औरत कमजोर है। कभी नहीं कमजोर होती हैं भैया, उनको कमजोर बनाया जाता है, कमजोर नहीं होती हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। जब इंसान के जीवन में हालत बिगड़ जाते हैं तो कुछ लोग बहुत टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं। बिल्कुल भैया बिल्कुल सही बोल रहे हो। थैंक यू,
थैंक यू सो मच। जी भैया जी, सही कहा है आपने। हमारे गौतम भैया जी बोल रहे हैं, एक अंधभक्त जब तर्क से हार जाता है तो आपको गाली देने लगता है। भारत में ऐसे अंधभक्त बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। बिल्कुल भैया, एकदम राइट। अंधभक्त कितने भी दिमाग से खाली हो, पर जैसे किसी पोस्ट में जुमलेबाज फेंकू ढोंगी शब्द पढ़ते हैं, वह तुरंत ही पकड़ लेते हैं कि उन्हीं के मुंह पर थूका गया है। गहरे से सुनोगे तो मुझे तो बुरा ही पाओगे, खुद आकर मिलोगे तो वादा रहा मुस्कुरा के जाओगे। बिल्कुल राइट, थैंक यू सो मच। संजय भैया, आप बहुत अच्छी बातें भी करते हैं। हमारे गौतम भैया बोल रहे हैं, संजय भैया बहुत बातें करते हैं गौतम भैया जी। हर बहनों का हमेशा सपोर्ट करते हैं, हर समय साथ रहते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। दोनों भैया को थैंक यू, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू भाई जी। हमारे संजय भैया बोल रहे हैं गौतम भैया जी आपको। भैया जी मुझे सेठ बुला रहे हैं, अभी आता हूँ। कोई बात नहीं भैया, थैंक यू। आप जाइए, काम देखिए सबसे पहले। कर्मों से ही इंसान को पहचान मिलती है, बाकी नाम तो लाखों लोगों के एक जैसे होते हैं। बिल्कुल करेक्ट भैया, सही बात है। थैंक यू सो मच। ओके भाई, आपका इंतजार रहेगा। साथ देने के लिए। हाँ, थैंक यू भैया।
काम भी कर लो ना, कपड़े की कटिंग कर लो। कभी कभी मेरा मन इतना रिसेट होने लगता है, मन कहता है कि मिल जाए, फिर उससे बताया जाए कि हम लोग कौन हैं। बदतमीजी करने वालों को भैया सिखाना पड़ेगा। स्कूल से मैसेज आ रहा बच्चों की एक्टिविटी का। गौतम हमारे भाई बहुत अच्छे हैं, उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है मेरे को। अच्छे हैं भैया, गौतम भैया बहुत अच्छे हैं। गौतम भैया बहुत अच्छे हैं।
उनके शब्द और विचार देखो कितने अच्छे होते हैं। बिल्कुल भैया, बहुत अच्छे हैं। लॉलीपॉप अभी काहे नहीं आई भाई, सुबह से शाम हो गई, उसको इंतजार है। मुझसे बोल रही है जल्दी बोलो मामा से, जरा वो चार्जर देना, फोन चार्ज में लगा। कह रही है जल्दी बोलो मामा से। झूठे बोल देते हो। इसका वाला, इस फोन का चार्जर खोज के लेके आओ। देखो कहाँ है, इसमें देखो, इस पे देखना, हटा के उस कमरे में देखो। किसका? इस वाले का फोन का? इस वाले फोन को, 14 पिन वाला उस जो। कमरे में। हाँ लेके आओ। ये वाला देना, चार्जर निकाल के लगा। आकाश 3-5 करके पता नहीं कहाँ इसका चार्जर खो दिया। लॉलीपॉप। शांत रहो। एक लोग एम्पायर हो गए थे।
एक्सपायर हो गए थे, उन्हीं के यहाँ थोड़ा चला गया था, तब से आया हूँ। सिर बहुत दर्द कर रहा है। हमारी प्यारी भांजी, हमें माफ करना, कल आपके लिए लाने भेजेंगे। वेरी वेरी सॉरी। गई अपने पापा के यहाँ। वेरी वेरी सॉरी, गई अपने पापा के यहाँ, सॉरी वाली। गौतम भाई देखो मुझे कैसे याद किए, क्योंकि उनके हृदय में मेरे लिए कितना प्रेम है। ऐसे भाई होने चाहिए दीदी। बिल्कुल भैया, एक दूसरे से मिलके रहना अच्छा लगता है, और क्या। समझना चाहिए एक दूसरे को। एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी होता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। कंचन सिस्टर, जय भीम, नमो बुद्धाय। वीर भैया जी, जय भीम। कैसे हो आप? स्वागत है आपका हमारी लाइव में। हम कब से आपको याद कर रहे थे भैया, आज कहाँ बिजी हैं? कैसे हो बड़े भैया जी? कैसे हो कंचन सिस्टर जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया, आप बताइए आप कैसे हो, और घर में सब लोग कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। ओके भैया, थैंक यू सो मच। ठीक ही रहना चाहिए। खाना पीना हुआ कि नहीं अभी आज? मेरी सिस्टर ने याद किया और मैं आ गया, बिल्कुल। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। डिनर करके ही आया हूँ। अच्छा भैया, डिनर हो गया आपका, बहुत फास्ट कर लेते हैं आप। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। बहन जी की लाइफ में आए, आपको याद ना करें, ऐसा हो सकता है। थैंक यू भैया, थैंक यू। गौतम भैया जी हमारे जुड़े हुए थे, सुन रहे थे सारी बात संजय भैया जी, लेकिन बिजी थे थोड़ा, तभी बोल नहीं पा रहे थे। थैंक यू सभी भैया को, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। सिस्टर जी थैंक यू कल के लिए। वेलकम भैया, थैंक यू किस बात का?
आप तो चले गए, हम बुलाते रह गए आपको। लाइव में जुड़ने के लिए गौतम भाई फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रिय बड़े भाई जी, हमारे संजय भैया बोल रहे हैं। वीर भैया जी आप तो चले गए, हम तो बुलाते रह गए। कौन गया था? मैं वहीं था सिस्टर, मुझे पता है आप वहीं थे, बट बोले तो नहीं ना। सिस्टर को एकदम परेशान कर देते हैं आप। लास्ट में मैंने देखा था, कमेंट नहीं किया। लास्ट में मैं गई थी ना, एकदम लास्ट में 2 मिनट के लिए बस सॉरी 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 चल रही थी। दोनों तरफ से सॉरी सॉरी चल रहा था, मैंने देखा था कमेंट। छोटा सा काम आ गया था भैया जी, हमारे गौतम भैया जी बोल रहे हैं संजय भैया कोई काम था इसलिए चले गए थे। थैंक यू भैया। थैंक यू सो मच। कल तो आपने भाई का पूरा साथ दिया सिस्टर जी, हमेशा देंगे भैया, कल ही थोड़ी ना। भाई बहन का ऐसा बंधन होता है ना कि शायद इस बंधन जैसा कोई बंधन नहीं है। वीर भैया आपको हृदय से जय भीम नमो बुद्धाय। और कैसे हो हमारे प्रिय बड़े भैया जी? वीर भैया जी, संजय भैया आपको जय भीम नमो बुद्धाय बोल रहे हैं। संजय भैया, संजय सर जय भीम नमो बुद्धाय सर, हमारे वीर भैया जी के तरफ से जय भीम नमो बुद्धाय सभी सम्मानित साथियों को लाइव में संजय भैया की तरफ से थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू सभी भाई को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से, जय भीम नमो बुद्धाय। हमारे वीर भैया जी बोल रहे हैं संजय सर आप ठीक हैं सर? गौतम भैया जय भीम नमो बुद्धाय। गौतम भैया हमारे जय भीम नमो बुद्धाय बोल रहे हैं वीर भैया जी। कंचन सिस्टर कल तो आपने लाइव युद्ध पूरा देख लिया। मैंने लास्ट में भी देखा था, लास्ट में जब आप लोग 2-3 लोग बचे थे, एक कौन था नाम नहीं याद आ रहा उनका, सिर्फ लास्ट में देखा सॉरी 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 चल रही थी दोनों तरफ से। फिर मैं आ गई, मुझे नींद आ रही थी, दवा खाई थी ना। हाँ रवि, सही कहे भैया, भी रवि पाजी। मैं, हाँ भैया बिल्कुल सही बोले आप, थैंक यू। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। देख लो रात कितना बड़े भाई बहन लड़े भाई बहन, हाँ लड़ाई हुई थी भाई बहन में, आज फिर नॉर्मल। आज नॉर्मल। भाई बहन में ऐसी लड़ाई होती है भैया 10 मिनट के लिए, फिर सब नॉर्मल हो जाता है। थैंक यू भैया, थैंक यू। संजय भैया कहाँ चले गए आप? कमेंट नहीं आ रहा आपका संजय भैया, गौतम भैया जी। ये भाई आज मॉर्निंग 6:30 बजे सिस्टर की लाइव पर था। अच्छा भैया, सुबह दीदी की लाइव थी। थैंक यू भैया, गौतम भैया थैंक यू, अजिंदर भैया थैंक यू सो मच, संजय भैया थैंक यू। संजय भैया जानते हो उनकी साधना दीदी की बात हो रही है।
संजय भैया भी साधना दीदी की लाइव में जाते हैं ना, जब काम ज्यादा रहता है तो नहीं जा पाते हैं, पहले तो बहुत जाते थे। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। आपको देखकर लगा होगा कि ये कल नहीं आएंगे। बिल्कुल। दीदी परेशान हो गई थी। दीदी भैया से बोल रही थी ना अपने हस्बैंड से, देख रहे हो चले गए वीर जी, क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, वापस आ जा। 6:30 मॉर्निंग बजे, फिर भी पहुंच गया। होना चाहिए भैया, आप लोग रह के साथ देते हैं ना, हौसला आता अंदर से कि नहीं काम करने में भी अच्छा लगता, नहीं हमारे साथ लोग सपोर्ट में हैं। जब अपने चले जाते, जैसे संजय भैया हैं, अब हमारी लाइफ में, हम लोगों की लाइफ में बराबर रहते हैं, जब नहीं आते हैं ना तो हम लोगों को अंदर से अजीब सा होता है भैया नहीं है लाइफ में। तो ऐसे होता भैया, एक लगाव होता है, एक होता भरोसा नहीं कि हमारी लाइफ में कोई है, थोड़ा साहस होता है, यही बात होती है। तर्क का त्याग करने वाले व्यक्ति के बहस करना मृत व्यक्ति को दवा देने जैसा है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल, थैंक यू। ऑन है, थैंक यू भैया, थैंक यू गौतम भैया, थैंक यू सो मच। धर्म के नाम पर लाठी उठाना सिखाया जाता है, अधिकार के लिए कलम उठाना नहीं, क्योंकि सरकार को भक्त चाहिए, जागरूक नागरिक नहीं। बिल्कुल भैया, राइट। 34 घंटे तक रहे, जब तक क्लोज नहीं करी सिस्टर ने। अच्छा भैया, तब तक रहे आप। जी भैया जी, सही बात है, हमारे गौतम भैया जी बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। यह बात सही बोल रहे हो आप कंचन सिस्टर जी। बिल्कुल भैया, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। साहस होता है भैया, बिल्कुल साहस होता है। आप लोग नहीं, आप कितना भी झूठ बोल के चले जाओ ना कि चले गए हैं, हम लोगों को यकीन होता नहीं ये लोग हैं, लोग देख रहे हैं कहीं से छुप के। भाई कभी बहन को अकेले नहीं छोड़ते हैं, इतना हमें भी भरोसा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों का। सिस्टर को भी पता होता है कि ये गए नहीं होंगे। बिल्कुल भैया, लेकिन ये होता है ना, जब मनवादी उसमें कमेंट करने लगते हैं ना, जब आप लोग चले जाते हो नहीं कुछ बोलते हो ना, तो घबराहट होती है उनको, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत लोग ऐसे आते भी हैं ना, परेशान हो जाती हैं अकेले। सिस तभी तो बोल रही थी कि मैसेज करो। बिल्कुल भैया, बिल्कुल, मैंने देखा था ना कल उनके लाइव में, बहुत लोग ऐसे जो थे कमेंट कर रहे थे, बहुत दिमाग एकदम डिस्टर्ब कर देते हैं भैया। मेरी प्यारी बहन, कभी अकेला मत समझना मेरी प्यारी बहन जी। थैंक यू भैया, दिल की गहराई से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम अकेले कभी नहीं समझेंगे, आप लोगों का साथ है तो हम अकेले कभी नहीं है भैया। थैंक यू भैया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सिस्टर मैं फिर फेंक देता हूँ। बिल्कुल भैया, फेंकना ही चाहिए, ऐसे लोगों को फेंकना ही चाहिए, बाहर कर दो। त्याग वही करे जहाँ उसकी कदर हो। दोपहर में दिया जलाने से अंधकार नहीं, दिए का वजूद खत्म हो जाता। बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। गौतम सर, थैंक यू सिस्टर का साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच भैया, सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी भाइयों का।
सिस्टर ने बोल रखा है, अगर वीर जी आपको लगे फेंकना है, पूछना मत मेरे से। बिल्कुल भैया बिल्कुल, आप लोग समझते नहीं है कि कौन कैसा कमेंट कर रहा है, सब समझ में आता। पूछने की क्या आवश्यकता है, ऐसे लोगों को तो बाहर ही करना चाहिए, आउट। उसमें पूछने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ एक फैमिली की तरह हैं, हमारे फैमिली को कोई भला बुरा कहेगा तो हम लोग को भी चुप नहीं बैठेंगे। बिल्कुल भैया बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आप लोग फैमिली से बढ़ के हैं भैया, फैमिली इस टाइम हमारे साथ नहीं है, आप ही लोग हो ना। आप लोग किसी फैमिली से नहीं, एक फैमिली मेंबर्स हो आप लोग। गौतम सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू वीर भैया जी, थैंक यू गौतम भैया, थैंक यू संजय भैया, थैंक यू सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया जी, हमारे गौतम भैया जी आपको भी बोल रहे हैं वीर भैया जी। मैं अभी कटिंग कर रहा हूँ और आप सबका कमेंट देख रहा हूँ भाइयों का। थैंक यू भैया, थैंक यू। अभी दोनों भैया हैं, तब तक आप बिजी हो जाना। जब भैया चले जाएंगे तो आपको फ्री होना पड़ेगा। जी भैया जी कर लीजिए, हाँ कर लीजिए, अभी गौतम भैया जी फ्री हैं। थैंक यू भैया। संजय सर आप कर लो काम, हाँ अभी वीर भैया जी हैं, गौतम भैया जी हैं, तब तक आप कर लो, आप टेंशन मत लो तब तक, जब तक भैया हैं लाइव में। हम सब हैं, बैठे हैं, बिल्कुल भैया, थैंक यू। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है आप लोग आते हैं तो हम लोगों को फेस पे स्माइल आ जाती है। सिस्टर को फोन नहीं होने देंगे। थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू सो मच। गौतम भैया थैंक यू, थैंक यू। कल तो सिस्टर भी सोच रही होंगी कि आज कंचन सिस्टर को क्या हो गया है। नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, सिस्टर समझ गई थी। ये तो वीर जी की साइड ले रही है। थैंक यू भैया, कोई बात ऐसी नहीं है। ऐसा लगा होगा कमेंट से एक दो बार में, लेकिन सिस्टर एंजॉय कर रही थी हमारे कमेंट को पढ़ पढ़ के, उनको पता चल गया होगा वीर भैया जी ने ही कुछ किया होगा। थैंक यू भैया, थैंक यू। ऐसे होना चाहिए, मनवादियों के बीच में दीदी एकदम ना डिस्टर्ब हो जाती हैं, आप लोग रहते हैं ना तो थोड़ा सा बातों से एंजॉय हो जाता है बीच बीच में। थैंक यू सो मच। नहीं दीदी को तो लोग बहुत परेशान कर देते हैं।
थैंक यू संजय भैया, थैंक यू। आप भी बीच बीच में हंस लिया करो, लेकिन ध्यान देना कपड़े पे, कहीं कटे ना गलत। सिस्टर को पता चल गया होगा, हाँ, कि प्रंको यहाँ हो रहा है कोई। थैंक यू भैया, थैंक यू। हमारे बड़े भाई वीर भैया जी कहाँ से हैं आप? वीर भैया जी बताइए, गौतम भैया पूछ रहे हैं आप कहाँ से हो। सुशीला की तरफ से हमारी बेटी को जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय। माता जी जय भीम, कैसी हैं आप? कल कंचन सिस्टर जानबूझकर साथ दे रही हैं वीर जी का, हाँ पता है। दीदी को पता चल गया होगा। वीर भैया जी आपको गौतम भैया पूछ रहे हैं। गौतम सर मैं पंजाब से हूँ सर। गौतम भैया जी हमारे वीर भैया जी ना पंजाब से हैं। जय भीम नमो बुद्धाय माता जी, जय भीम। कैसी हैं आप? खाना पीना आपका हुआ? सु शशि दीदी जी जय भीम नमो बुद्धाय। शशि दीदी नहीं है भैया, इनका नाम है सुशीला देवी। ये हम लोगों की माँ के बराबर है, मम्मी जैसी इनकी एज है भैया। बहुत है, इनको सपोर्ट को बहुत ज़रूरत है। बहुत अच्छी मम्मी जी हैं। आओ बेटी, आज हम मछली बनाए हैं, रोटी बनाए हैं, आओ। अरे मम्मी जी सॉरी, माफ़ी चाहेंगे हम आपसे। हम कुछ नहीं खाते हैं, हम सादा खाना खाते हैं बस, मीट मछली कुछ नहीं खाते हैं माता जी, सॉरी। बाकी आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूछने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी जय भीम नमो बुद्धाय। हमारे अजिंदर भैया जी आपको बोल रहे हैं। माता जी जय भीम नमो बुद्धाय बोल रहे हैं हमारे अजिंदर भैया जी आपको। माता जी आपका बेटा आ जाए खाने के लिए, अजिंदर भैया बोल रहे हैं माता जी कि खाने के लिए आ जाएं। हमारे संजय भैया बोल रहे हैं बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी, शायद कुछ छिपकली का अचार। आप ही रोज खाते हो, हम नहीं खाते हैं छिपकली का अचार। आप ही खाते हो। वीर भैया जी सुन रहे हो? संजय भैया हमें रोज खिलाते हैं छिपकली का अचार, क्या क्या बोलते हैं। ये भी हमको यही सब खिलाते हैं। मैं दोनों भाई बहन के बीच में नहीं आ सकता, सॉरी सिस्टर। फिर मैं भी नहीं आऊंगी भैया, सोच लेना फिर। सोच लेना भैया, फिर हम भी पलट जाएंगे, तब हम भी आपका साथ नहीं देंगे, ये भी जान लीजिए, अगर आप हमारा साथ छोड़ दे। लाइव में माता जी, सिस्टर जी, बड़े भैया जी, छोटे भैया जी को सबको जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय। गौतम भैया जी जय भीम। माता जी शायद चली गई,
नाना सिस्टर आपको मेरा साथ देना है, अच्छा। ओके भैया, हम देंगे आपका साथ, हमेशा देंगे। थैंक यू, आपसे प्रॉमिस किया ना, आपका साथ देंगे हम। थैंक यू भैया, थैंक यू गौतम भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू अजिंदर भैया, थैंक यू। आप लोग हंस ले रहे हो। क्योंकि मेरे तो हर तीसरे दिन युद्ध चलता है, अच्छा भैया। हमारा युद्ध नहीं होता भैया, बस भैया हमको छिपकली का अचार कभी किस चीज का यही खिलाते रहते हैं। इनको पता है ना इस चीजों से हम चिढ़ते हैं, इसलिए। हमारा तो आप सिस्टर बहुत बार देख चुकी हैं, हम रोज ही देख लेते हैं भैया। शुरू में नहीं तो लास्ट में हो ही जाता है, लास्ट में नहीं तो शुरू में हो जाता है। परसों सिस्टर ने सॉरी बोला लाइव के बाद, अच्छा भैया। आप दीदी को रुला भी देते हो परेशान करके। थैंक यू संजय भैया, थैंक यू। आज मैंने बोला लाइव के बाद। होता है भैया, सही बात, दो में से किसी को एक को झुकना पड़ता है, चाहे कोई भी झुके। सब लोग अगर रहेंगे ना ऐसे ही अपने अपने में, तो फिर मामला खत्म हो जाएगा वहीं से। दो में से एक को तो झुकना ही है, चाहे भाई झुके चाहे बहन झुके। जहाँ भाई झुकना ना चाहे वहां बहन को झुकना चाहिए, जहाँ बहन ना झुकना चाहे तो वहां भाई को भी झुकना चाहिए। कल तो मेरी गलती थी, आपको बताया तो था, मैं देख रही थी, सब देख रही थी, तभी तो सिस्टर परेशान हो गई थी। हम भी हैं बिल्कुल भैया, आप भी साथ में हो बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू भैया, आप भी हो, सब लोग साथ में हो। कल तो पाजी भी बहुत परेशान हो गए थे, हाँ भैया, दीदी उन्हीं से तो बोल रही थी, वो भी परेशान हो गए थे। गौतम सर आप भी हैं सर, हाँ भैया, हमारे अजिंदर भैया बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच भैया। ऐसे होना चाहिए, भाई भाई के बीच, बहन बहन के बीच, सबके बीच ऐसे एक एक साथ सब मिल के रहते हैं ना तो अच्छा लगता है। जब एक दूसरे को देख के जलन रखते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता। किसी और की परेशानियों को समझने के लिए व्यक्ति को खुद उन परेशानियों का एहसास होना जरूरी होता है, बिल्कुल भैया। संजय भैया बिल्कुल।
बिल्कुल बिल्कुल राइट। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे जनाब। बिल्कुल राइट भैया। संजय सर, बिल्कुल सर। हमारे वीर भैया जी बोल रहे हैं, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सभी भाइयों को। थैंक यू, थैंक यू। मॉर्निंग पाजी लाइव में सिस्टर को बोल रहे थे कि आप दोनों की रात लड़े थे। अच्छा, दीदी को बोल रहे थे। मतलब उनका कहने का मतलब ये था आप लोग रात में लड़े थे, सुबह कैसे बोल रहे हो। हाँ, मैं समझ गई भैया। अब दोनों साथ में हंस रहे हो, वो चीज मैं समझ गई। उनके कहने का मतलब यही था। थैंक यू भैया, थैंक यू। हृदय से आप दोनों भाई का आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे दोनों प्रिय बड़े भाई जी। थैंक यू सो मच बड़े भैया जी। थैंक यू। सिस्टर मेरी डायमंड है, आप भी डायमंड हो। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू भैया, थैंक यू। यही तारीफ कर लूं, वहां नहीं करूंगा। वहां क्यों नहीं करोगे भैया? हमारे संजय भैया क्लैपिंग कर रहे हैं। संजय भैया पता है, साधना दीदी और वीर भैया के बीच में ऐसे हो रहा, कह रहे हैं कि यहाँ तारीफ कर लेंगे उनकी, बट उनके लाइव में जाके उनकी तारीफ नहीं करेंगे। अकड़ भी रखते हैं भैया, दूसरी जगह तारीफ भी करते हैं। सिस्टर के लाइव में करते तो शायद सिस्टर को कितनी खुशी मिलती ना भैया जी। मुझे पता है दीदी, वीर जी को साधना दीदी बहुत मानती हैं, हृदय से अपना भाई मानती। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। होना भी चाहिए भैया, ऐसे होना चाहिए। एक दूसरे को मतलब एक सच्चे रिश्ते होने चाहिए। सिस्टर मेरी करती हैं, मैं देखा था कि लाइव में। बिल्कुल भैया, सिस्टर तो हमेशा बोलती हैं। जिस दिन मैंने बोला वीर जी बहुत अच्छे भैया हैं, दीदी आप ऐसा काहे बोलती, कहती नहीं सिस्टर मैंने कब बोला वीर जी अच्छे नहीं है, मैं भी तो हमेशा यही बोलती हूँ वीर जी बहुत अच्छे हैं। मेरे सामने नहीं करती, करती है भैया, क्यों नहीं करती। आज तो उस दिन लाइव में जुड़े थे तब भी तो बोल रही थी बहुत अच्छे हैं, जब मैंने कमेंट किया था। हमारे संजय भैया जी का बड़प्पन है, बड़े होकर छोटे बन जाते हैं। बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही बात। ये चीज तो मैं दिल से मानती हूँ। बिल्कुल राइट गौतम भैया जी, आप बहुत अच्छी बात बोले हैं। ये चीज तो मैं 100% मानती हूँ। भैया को देखो तो भैया सच में हम लोगों से बड़े हैं, लेकिन भैया सबसे छोटे बन जाते हैं। सबको दीदी, सबको भैया,
ये बहुत अच्छा लगता है भैया का, सच में। सबके अंदर ये गुण नहीं होते हैं भैया। बहुत लोगों की अकड़ होती है ना कि हम बड़े हैं, पर भैया के अंदर ये चीज नहीं है। भैया सबसे छोटे बन जाते हैं, बिल्कुल। थैंक यू भैया, संजय भैया, दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जितना विश्वास और भरोसा वीर जी पर करती हैं लाइव में, मैं जानता हूँ शायद किसी के ऊपर नहीं करती हैं साधना बहन। बिल्कुल भैया, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। एक लगाव होता है, एक विश्वास होता है भैया ना, विश्वास बनाने से बनता है भैया, ऐसे नहीं। अगर कोई वैसा काम करता है तभी विश्वास होता है, सबके ऊपर थोड़ी होता है भैया। गौतम सर, आप सब ही तो मेरे भाई बहन है। बिल्कुल भैया, वीर भैया जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी भाई, मुझे आप लोगों को अपने शादी में नाचना है, कोबरा डांस। अच्छा। वीर भैया जी की शादी हो गई है, उनके बच्चे भी हैं। आपकी शादी बाकी है ना, वीर भैया जी आएंगे आपकी शादी में डांस करने के लिए। थैंक यू संजय सर, हमारे वीर भैया जी बोल रहे हैं। संजय भैया, आपकी शादी में सब लोग कोबरा डांस करेंगे। बाकी तो मेरे हिसाब से सबकी शादी हो गई है, आप ही बचे हो। आपकी शादी में सब लोग एंजॉय करेंगे। संजय सर, मेरी शादी हो चुकी है। संजय भैया दोबारा कराएंगे क्या वीर भैया जी डांस के लिए? संजय सर, आपकी शादी में भांगड़ा, अच्छा भांगड़ा डांस करेंगे भैया। हाँ, पंजाबी का फेमस है। मैं तो बहुत छोटा हूँ, तभी तो मेरी अभी शादी नहीं हुई है। झूठ काहे बोलते हो? झूठ काहे बोलते हो बड़े भैया? भांगड़ा सिस्टर, हाँ मुझे मालूम भैया, पंजाब में यही होता है भांगड़ा। जी बिल्कुल भाई जी, मजबूत वाला डांस करेंगे। गौतम भाई अभी कॉमेडी कर रहे हैं, मजबूत वाला डांस करेंगे। पंजाब का सबसे फेमस यही डांस होता है, भांगड़ा। पंजाब की साइड लुधियाना, है ना भैया? मुझे तो नहीं आती पंजाबी पंजाबी भैया, बट मेरे भाई हैं, भतीजे हैं, भतीजी हैं, उन लोगों को आता है। वो लोग शुरू से वही रहे हैं। पंजाब की शान है, बिल्कुल भैया, बिल्कुल पंजाब की शान है। वीर भाई, मैं अपनी साली से शादी कर दूंगा, पहले मेरी हो जाने दो। गौतम भाई बच के निकल रहे हैं, इनकी तो शादी हो गई है। बताएं गौतम भैया, आपकी शादी हुई है कि नहीं? जब आप हैं तो गौतम भैया नहीं निकल पाएंगे, मुझे पता है। कहाँ से निकल पाएंगे? जी हाँ भैया, हमारी भी शादी हो गई है। संजय सर, मेरी शादी तो 13 साल पहले ही हो गई है। अच्छा भैया, आपकी 13 साल पहले, लगभग हमारी शादी, आपकी शादी 1-2 साल के आगे पीछे हुई है। सिस्टर पाजी को आईडी देखो। ओके भैया, थैंक यू। थैंक यू भैया। भाभी की ना, गौतम भाई दिखा रही हूँ भैया, 1 मिनट। गौतम भाई, आपकी भी एक शादी करवा दूंगा, अगर मेरे पास 2 साली रहेंगी। दोनों भाई का फिक्स रहेगा शादी।
क्या क्या भैया, 2 साल बाद थी फिर मैरिज की। अच्छा भैया, लव मैरिज हुई है? अच्छा, मैरिज किए हैं, शादी। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। रिश्ते में रिस्पेक्ट होना चाहिए बस भैया, और कुछ नहीं है। लव मैरिज था सिस्टर, मुझे पता चल गया भैया। भैया जी देर हो गई, पहले कहाँ थे? थैंक यू भैया। गौतम भैया भी, गौतम भैया भी मिल गए हैं, सही। एक साथ जॉब थी। अच्छा भैया, आप लोग जॉब एक साथ कर रहे थे? ओके भैया। अभी तो आपके चरण कमल पड़े हैं प्रभु, लेट होगा लेकिन दुरुस्त होगा, अपने अपने साली से ही करवा दूंगा। गौतम सर, ये मैं नहीं बोल सकता क्योंकि शिवानी मारेगी। भाभी भी होंगी साथ में ना। हाँ, एक साथ कान पकड़ी होंगी आपका। बोलो। मुझे पता है भैया कटघरे में खड़े हैं, बोल नहीं सकते वहां पे। गौतम भैया समझ जाइए, अब वीर भैया जी कहाँ पे हैं। गौतम भाई, अपना इंस्टा आईडी मेरे कमेंट बॉक्स में डालना, मैं जो है आपको एक्सेप्ट करूंगा रिया सेन आईडी से। अच्छा भैया। तीनों भाई मिलके आज एंजॉय करो। तीनों भाई के बीच में एक बहन भी है ना। सिस्टर, आप हमेशा हंसती अच्छी लगती हो। अच्छा भैया, थैंक यू सो मच। आप लोग रहते हैं तो हंस लेते हैं। तभी तो हंसा रहे हैं तीनों भाई। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाइयों का, थैंक यू। हमें पता है वीर भैया जी, जिस दिन हमने यहाँ रोया था ना, आप उस दिन हमारे लाइव में थे। तब से आप हमारी लाइफ में कंटिन्यू आते हैं। आपने ये दिलासा भी दिलाया था, बहन कोई बात नहीं, आपके भाई नहीं है, हम आपके भाई बन के आपके साथ निभाएंगे। थैंक यू सो मच भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार 8688 आईडी है। अच्छा भैया। संजय भैया देख लेना, गौतम भैया ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी सेंड किया है। भाभी तो आपकी क्रिश्चियन है। अच्छा भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल बहन, हमारी जब हंसती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू संजय भैया, थैंक यू। तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे बलिहार दीदी जी। थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सिस्टर, आपको मेरा पता है, मैं फेंक वाला करता हूँ। नहीं भैया,
नहीं, फेक वादा नहीं करते हो, मुझे पता है। सब भाई नहीं बनते भैया, जो भाई बनता हो कभी फेक नहीं बनता, ये पता है ना। टाइपिंग मिस्टेक, ओके भैया, थैंक यू। कोई बात नहीं है, क्या सही लिख रहे थे वही लिख के भेजो। फेक वादा नहीं करता हूँ, यही बोलना चाह रहे थे आप ना। मैं कह रहा था कि मैं कभी किसी बहन को फेक वादा नहीं करता। बिल्कुल राइट, मैं समझ गई, जब दोबारा आप बोले ना मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, हम सोचे हमें भी हंसाने के लिए ऐसा बोल रहे हो। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। हमें भी समझ में आ जाता है, भाइयों के कमेंट से, भाइयों के बात से हम लोग समझ जाते हैं तुरंत। एक दो कमेंट आता है तभी हम समझ जाते हैं कैसे किसके व्यवहार हैं, कैसे लोग हैं। हम सब समझ में आ जाता है भैया। आप लोग जिस दिन झूठ बोलोगे ना उस दिन भी नहीं हम लोग विश्वास मानेंगे। सिस्टर, आप और हम किनकी लाइव पर मिले थे? हमें तो ख्याल से साधना दीदी की लाइव में भैया, मेरे याद से तो यही आ रहा है। आप बताओ एक बार, शायद मेरे से कोई भूल हुई हो। बताना वीर भैया जी, किसके लाइव में मिले थे? याद नहीं आ रहा है मुझे। हाँ जी सिस्टर, सही है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम ज्यादा किसी के लाइव में नहीं जा पाते भैया। जिस दिन आपको पहली बार बुलाया था सिस्टर, अच्छा भैया। गौतम भाई सच में नहीं आ रहा है आईडी। उस दिन भी युद्ध हो रहा था, हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। हाँ सही बात कह रहे हैं भैया। मुझे याद है जिस दिन 9 तारीख का दिन था, जिस दिन मेरे भाई की पुण्यतिथि थी, आप लोग जुड़े थे ना, उस दिन मैं बहुत भावुक थी। दीदी मुझसे पूछ रही थी, मैं उस दिन बता दिया था ना वो बात को सबके सामने। उसी दिन आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा उत्साहित किए थे कि नहीं बहन टेंशन मत लेना, हम लोग हैं आपके साथ। मुझे अभी याद आया भैया। भैया जी आप भेज दीजिए अपनी आईडी, हम यहाँ से सर्च करके आपको फॉलो करेंगे। संजय भैया आप भेज दीजिए ना गौतम भैया को। हाँ जी बिल्कुल भैया, थैंक यू, बिल्कुल सही बिल्कुल सिस्टर सही, बिल्कुल भैया, थैंक यू सो मच, मुझे याद आ गया। क्योंकि मैं उस दिन बहुत ज़्यादा परेशान थी। उस दिन हमारे महापुरुष कांशी राम साहब जी की पुण्यतिथि थी, उसी दिन हमारे भाई की भी थी।
गौतम भाई सर्च में नहीं आ रहा है आरडी। कोई बात नहीं भैया, अपना ही बता दो ना भैया, सर्च करके आपको कर लेंगे। रिया 9231 सेन 9231। थैंक यू भैया, थैंक यू। गौतम भैया देख लेना, आप तो पहले भी आती थी पर मैं कभी आपको नहीं बुलाया था। अच्छा भैया, मैं बहुत पहले से, कम से कम दीदी की लाइव में 4-5 महीने पहले से, मैं जब संजय भैया से जुड़ी हूँ तभी से साधना दीदी से भी जुड़ी हूँ, क्योंकि साधना दीदी संजय भैया के लाइव में आती थी और संजय भैया ही बताए थे कि साधना दीदी हैं ये, तब से मैं उनके लाइव में आने जाने लग गई भैया। पहले नहीं जानती थी, मैं संजय भैया के माध्यम से साधना दीदी को जानी हूँ। भैया जी क्रोम वेरीफाई नहीं हुआ इसलिए नहीं आ रहा होगा। हाँ भैया, क्रोम ब्राउजर से वेरीफाई मांग रहा है सबका इस टाइम। मुझे शर्म लगती थी, किस लिए भैया? एक आंख की डीपी लगी है, काहे एक आंख की डीपी लगाए संजय भैया? दोनों आंख की लगानी चाहिए थी ना। कहीं सिस्टर ये ना सोच ले कि ये बंदा क्यों बुला रहा। थैंक यू भैया जी, थैंक यू। हमारे गौतम भैया बोल रहे हैं संजय भैया। वीर जी भैया आज हमें हंसाएंगे बहुत, पता है मुझे। एक बहन को हंसाओ, एक बहन को परेशान इतना कर दो ना कि वो एकदम परेशान हो जाए। हाँ, हम आज चल के आज आपकी शिकायत करेंगे। 1 मिनट में आता हूँ भैया जी, कोई बात नहीं है भैया, आप भी काम कर लो ना। कभी कभी भाइयों से जुड़ना होता है तो इंस्टा आईडी से आसान रहता है जुड़ना। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। आप लोग चलाते हैं ना, कोई चीज होता है तो आसान हो जाता है। बिल्कुल भैया, थैंक यू। आप सिस्टर को मत बता देना कि यहाँ हंसता हूँ। नहीं, हम बताएंगे जरूर। आज 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 क्या कंप्लेन आज होगी, आज सिस्टर की लाइव में आपकी। कल साथ दिया था ना, आज सच्चाई बताऊंगी आपकी। वैसे आज नहीं होगा युद्ध। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। आप सब बहनों का ही तो आशीर्वाद है जो थोड़ा बहुत लोग जानते हैं। बिल्कुल भैया, थैंक यू सो मच। किसी का आशीर्वाद नहीं है भैया, बस आपका स्वभाव है। आपका जो स्वभाव है ना, इसके वजह से सब जानते हैं। हमारा आशीर्वाद नहीं भैया। अगर आपका स्वभाव अच्छा नहीं रहेगा ना तो हमारे आशीर्वाद से कुछ नहीं होगा। हमारे आशीर्वाद से आपको कोई नहीं जानेगा। वरना मैं हूँ कौन? आप बहुत कुछ हो भैया, ऐसा काहे बोल रहे हो?
इंसान अपने स्वभाव अपने विचार से फेमस होता है भैया, किसी के आशीर्वाद से नहीं। अगर कर्म अच्छे हैं ना तभी सब संभव है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। अगर आपके अच्छे स्वभाव नहीं होते तो हम आपको नहीं जानते, आपकी दीदी की लाइफ में जाते थे। आप अच्छे विचार नहीं होते तो दीदी भी आपसे बात नहीं करती। संजय सर किधर गए आप? संजय भैया किधर गए? बड़े भैया जी एक ग्राहक आ गए हैं। अच्छा भैया देख लो। आप सब बहनों के बिना हम सब भाइयों का है ही कौन? ये तो बात मानते हैं भैया, ये बात मानते हैं, लेकिन आपके अंदर इतने अच्छे गुण आपके अच्छे विचार नहीं होते ना तो बहनें भी कोई काम की नहीं होती। संजय सर देख लो आप। संजय भैया भी ग्राहक के बीच में पड़े हुए हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। हम बहने आप लोगों की वजह से हम लोगों के फेस पे स्माइल है। आप जैसे भाइयों की वजह से हम लोग निडर होके बैठते हैं, बात करते हैं, हंसते हैं। हम लोगों को तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। सिस्टर ये सब भाइयों का फर्ज है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल दिल से धन्यवाद आपका। बिल्कुल सबका होना चाहिए, भाई बहन सबका फर्ज होना चाहिए, अपना अपना फर्ज निभाना चाहिए सबको। फर्ज तो सबका बनता है भैया, लेकिन सब कहाँ करते हैं? जिसके अंदर इंसानियत होती है वही करते हैं ना। जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय बड़े भैया जी। जय भीम, कैसे हैं आप? स्वागत है भैया आपका हमारी लाइव में। कैसे हैं बड़े भैया जी? थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। बहन मैं आ गया हूँ, स्वागत है भैया आपका। थैंक यू, थैंक यू सो मच भैया। हम ठीक हैं, आप लोग बताइए क्या हाल है? हम लोग भी भैया ठीक हैं, आप लोग साथ हो तो हम लोग भी ठीक हैं। हम लोगों को क्या होगा, अच्छे हैं। जब आप लोग नहीं रहते हैं तभी हम लोग सही नहीं रहते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच।
गौतम सर वेलकम है आपका मेरी निक्की बहन दीदी लाइव बीच में। थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू वीर भैया जी, थैंक यू सो मच। बड़े भैया जी थैंक यू, थैंक यू। गौतम भैया हमारे बोल रहे हैं, इंदर भाई जय भीम नमो बुद्धाय। बड़े भैया जी थैंक यू भैया, थैंक यू। संजय भैया अभी चले गए हैं। इंदर भैया आपको देख के बहुत खुश होते हैं, पर कोई ग्राहक आ गए हैं, चले गए हैं, अभी आएंगे। बोलते हैं जहाँ भैया रहते हैं वहाँ बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गौतम भैया जय भीम नमो बुद्धाय। हमारे इंदर बड़े भैया जी बोल रहे हैं, संजय भैया आ गए हैं। संजय भैया बोल रहे हैं, हमारे सबसे प्रिय सबसे बड़े भाई जी आपको हृदय से जय भीम नमो बुद्धाय। गौतम भैया बोल रहे हैं, संजय भैया बोल रहे हैं, इंदर भैया जी आपको। संजय सर थोड़ा मेरी निक्की बहन दीदी लाइव भी स्वागत है। थैंक यू भैया, थैंक यू। थैंक यू भैया, वीर भैया जी थैंक यू सो मच। संजय भाई जय भीम नमो बुद्धा हमारे बड़े भैया जी बोल रहे हैं, ओके भाई। थैंक यू भैया, थैंक यू। हमारा नाम भी चेंज हो गया भैया। वीर भैया जी पता है संजय भैया हमारा नाम क्या रखे हैं, आपको पता है? वीर भैया जी आपको नहीं पता होगा। संजय भैया बताना हमारा नाम क्या रखे हो। कंचन सिस्टर, आप भी सिस्टर की तरह पंजाबी की। नहीं भैया। नहीं भैया, थैंक यू सो मच। भरता बनाते हो? नहीं भैया, हमें नहीं आता है। नहीं सिस्टर, अच्छा आपको नहीं पता है। इंदर बड़े भैया जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। देख लीजिए संजय भैया क्या लिख दिए हैं, हमारा नाम परवल नाम है, परवल। थैंक यू सो मच बड़े भैया जी, थैंक यू। वीर भैया जी थैंक यू। परवल संजय सर पक्का। पक्का वाला है कि कच्चा वाला है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज बहुत हंसी हूँ भैया। थैंक यू। बताओ संजय भैया परवल कौन सा है, कच्चा वाला है पक्का वाला? बड़े भैया जी थैंक यू सो मच, जय भीम नमो बुद्धाय। बड़े भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू भैया, थैंक यू। थैंक यू भैया।
आप सब बहनों से ही लड़ हँस लेते हैं। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। बिल्कुल, जहाँ अपने होते हैं वहीं खुशी होती है भैया, लड़ाई में भी खुशी होती है, हर समय पे खुशी होती है भैया, कोई भी समय हो। दुःख रहता है तो भी खुशी मिलती है आप लोगों से, और गम होता है, कुछ भी हँसी वाली बात होती है तो भी हँसते रहते हैं, हर समय, कोई भी समय हो। अपनों के बीच में अच्छा लगता है भैया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आप किधर हँस लेते हैं, उधर लड़ लेते हैं। चलो, दोनों हो जाता है, लड़ाई हँसी दोनों साथ में हो जाती है, कहीं हँसना कहीं लड़ना, और कभी रोना भी आ जाएगा। ये भी सोच लो, समय आने वाला है। थैंक यू भैया, बड़े भैया जी, थैंक यू सो मच। संजय भैया भी हंस रहे हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू। संजय भैया सही कहा ना, हम भी कभी कभी कोई बात गुस्से में बोल देते हैं संजय भैया को, संजय भैया बीमार ही पड़ जाते हैं। सही बोला ना भैया, बताना। सिस्टर भी कभी टेंशन में पड़ जाती हैं, हो जाता भैया सही में, कभी कभी सीरियस हो जाती है बातें, बेशक उसको हंसी में होती है लेकिन सीरियस ले लेते हैं। कल देखा नहीं था सिस्टर क्या बोला सिस्टर ने, हाँ मैंने देखा। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। कल अगर आप ये करोगे तो शिवानी को फोन करूंगी। दीदी ने बोला ना, मतलब भाभी से बता देंगी, आपको धमकी मिलती रहेगी। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ भैया मैं समझ गई। दीदी के पास कोई ऑप्शन होते नहीं है, आपको पता है, जब वो ज्यादा रिस्क जाती है तो फिर कुछ ना कुछ तो उपाय सोचना ही पड़ेगा ना। शिवानी से बनती है उनकी, अच्छा भैया, अच्छी बात है, बनना चाहिए, भाभी अच्छी है तभी तो बनती है, भाभी समझती है ना इस बात को। समझना ही चाहिए भैया, एक दूसरे को समझना ही चाहिए। सिस्टर आप कभी
मेरी किसी बात का गुस्सा मत करना। नहीं भैया, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता भैया। कभी आपसे लड़ूं। मुझसे मत लड़ना भैया, मैं रोने लग जाती हूँ। आप मुझे हंसा सकते हैं सच में। दीदी तो पता नहीं कैसे सह लेती है, मुझसे कोई लड़ लेता मेरे आंखों में आंसू आ जाती है। संजय भैया से पूछो, मैं रो दी हूँ कई बार लाइव में। ओन हूँ। थैंक यू भैया, गौतम भैया थैंक यू सो मच। मेरे जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ भैया, सच्ची मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। संजय भैया से पूछो, संजय भैया को पता है। ओ नहीं सिस्टर, मैं आंसू नहीं देख सकता आपका। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सच्ची है, मुझे कोई कुछ बोल देता है ना, मेरे आंखों में आंसू आ जाते तुरंत। मैं कितना भी रोकू ना, वो टपक जाएंगे पक्का। थैंक यू भैया, थैंक यू, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम भैया जी आपको भी। हमें पता है आप बिजी हैं, फिर भी सपोर्ट करते हैं भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। आप लोग बहनों के लिए कितना टाइम निकालते हो, अपनी इतनी कीमती समय निकालते हो। थैंक यू भैया, थैंक यू संजय भैया, थैंक यू सो मच। फिर आपसे कभी युद्ध नहीं। बिल्कुल भैया, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। पहले ही हार मान ले। सच्ची भैया, हार मानना ठीक है। जब हम रो देंगे तो फिर आप भी निराश हो जाओगे, अच्छा नहीं लगेगा ना फिर। पहले ही हार मान लेना अच्छा है भैया। अगर हम रोएंगे तो आपको भी हर्ट होगा बाद में। मैं और सिस्टर तो बात ईगो पर ले जाते हैं। अच्छा भैया, ईगो पर ले जाते हैं। बिल्कुल भैया, बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। हाँ, एक दूसरे को कंपेयर करते रहो ईगो ईगो में। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। पर नहीं कंचन सिस्टर, पर हमारी सिस्टर लाखों में एक है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। लाखों में एक है, आज हम कमेंट करके बताएंगे दीदी से। उनको बता देना कि मैं ये बोलता हूँ। बिल्कुल बता देंगे, आज आज दीदी की तरफ रहेंगे, आपकी तरफ नहीं रहेंगे। नहीं तो हमारी दीदी निराश हो जाएंगी। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। संजय भैया हंस रहे हैं। भैया बोलो, क्यों हंस रहे हो सिर्फ, कुछ तो बोलो। आज लाइफ बहुत अलग चल रही है। वीर भैया जी आते हैं तो हंसाते हैं।
हमको पता है। मैं चलता हूँ घर, क्योंकि मेरा आँख दर्द करने लगा। आज मैं चश्मा नहीं लाया हूँ और जैसे लग रहा है बुखार भी हो जाएगा। ठीक है भैया, घर जाइए, आराम से दवाई ले लीजिएगा आप। संजय भैया, आप उस दिन भीग गए थे ना, टेंशन भी ले लिए थे, इसलिए आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा, मुझे पता है। मुझे पता है आप सही नहीं है आपका स्वास्थ्य। दवाई ले लेना भैया, संजय भैया दवाई ले लेना आप। बाय बाय भैया, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बाय। दवाई ले लेना आप, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना। बाय वीर जी, हमारे संजय भैया जी, भैया आपको बाय बोल रहे हैं। संजय भैया जा करके दवा ले लेना, ठीक है, बाय बाय, जय भीम, नमो बुद्धाय। गौतम भैया बोल रहे हैं संजय भैया आपको, बाय भैया, संजय भैया बाय, दवाई ले लेना आप। बाय गौतम भैया, संजय भैया बोल रहे हैं, बाय बाय भैया। हमारे वीर भैया जी बोल रहे हैं संजय सर जा रहे हो। हाँ भैया, भैया की तबीयत ठीक नहीं है। जय भीम, नमो बुद्धाय, संजय सर, हमारे वीर भैया जी बोल रहे हैं संजय भैया आपको तबीयत ठीक नहीं है भैया। संजय भैया की, उन्होंने बारिश में भीग गए थे ना, उनको फीवर आ गया है। आप शीश की साइड लिया करो। हाँ, आज आज उधर ही रहेंगे, आज हम दीदी की साइड रहेंगे, क्योंकि आपने कल दीदी को बहुत परेशान किए थे। आज हम दीदी के साइड रहेंगे। दीदी भी कहेंगी कंचन सिस्टर कहाँ कहाँ बदल रही है, एक बार उधर जाती है, एक बार इधर आती है। हाँ? थैंक यू भैया, थैंक यू। संजय भैया जी चले गए, हाँ भैया चले गए, गौतम भैया संजय भैया चले गए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए, नहीं तो वो नहीं जाते हैं। सिस्टर सच में बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं भैया, सच में नहीं है। बंद कर देना बाबू, बंद कर देना, दरवाजा बंद कर देना।
दीदी की एक लाइव देखना। अच्छा भैया, ओके थैंक यू। जो मैं बोलूँ सिस्टर, ओके भैया ओके। ठीक है। एक घंटे 27 सेकंड स्टार्ट करना। ओके भैया, ठीक है। थैंक यू भैया, थैंक यू। उस दिन मुझे पता चला था। अच्छा भैया, ओके थैंक यू, मैं देखूंगी। सिस्टर कितनी केयर करती हैं, एक बंदे से लड़ गई थी सिस्टर। अच्छा भैया। भैया देखो, हमारा फर्ज वही है, जो भाई हैं हमारे, मतलब हमारे लिए हमारी केयर करते, तो हमारा भी फर्ज होता है उनका केयर करना। जैसे वो हमारे लिए किसी की बात नहीं बर्दाश्त कर सकते, वैसे उनके लिए हम भी किसी की बात नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। मेरे को गलत बोला था, वो चीज़ मैं समझ गई भैया। बिल्कुल। जैसे हम लोगों को कोई गलत बोलेगा, आप लोग नहीं सह पाते हो ना, आप लोगों को कोई गलत बोलेगा तो हम लोग भी नहीं सह पाएंगे, चाहे कोई भी हो। मैं था भी नहीं, उससे क्या मतलब भैया, जब कोई रहे तभी, ना रहे तो नहीं, हमारे रिश्ते हैं ना। बताओ। इंसान का उस टाइम मौजूद होना ही नहीं, रिश्ते तो है ना। मुझे तो बाद में पता चला। अच्छा भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। फिर लाइव दोबारा देखी। अच्छा। चलो, किसी तरीके से विश्वास तो आपको आया। मैं वह लाइव डाउनलोड कर रखी हूँ। अच्छा भैया, उसको डाउनलोड करके रखे हो। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। विश्वास तो अपने से ज़्यादा है सिस्टर पर, होना भी चाहिए भैया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सब पे विश्वास होना ऐसे ही चाहिए भैया। हम अगर सामने वालों को जिस तरीके से समझेंगे, वो भी वैसे ही समझेगा भैया, ऐसा नहीं है। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो नहीं समझते हैं।
आपकी किसी वीडियो पर कमेंट से लिंक भेज दूंगा। ओके भैया, थैंक यू, आप भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगी, मेरे लिए आसान रहेगा। पक्का देखना, जरूर देखूंगी भैया, बिल्कुल देखूंगी, ऐसी बात नहीं है, मैं पक्का देखूंगी, आपसे प्रॉमिस है, आप भेजना। हाँ जी, थैंक यू भैया, आप भेजिएगा, मैं आज वेट करूंगी। जरूर, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। दिवाली वाले दिन की है लाइव। ओके भैया, थैंक यू, आप भेजिएगा लिंक, मैं आज उसको देखूंगी। कभी सिस्टर को इतने गुस्से में नहीं देखा होगा आपने। अच्छा भैया, भेजना, मैं लिंक, मैं आज वीडियो देखूंगी।